let's go into this and start our semiconductor devices. I'm following the book called I'm following this book. um uh-oh okay, let it be. So I'm following this book called Modular Series on Solid State Devices, um which is volume 1, and from that I have taken chapter 1, which is on general information. It is the chapter 1 is called Semiconductor General Information. I have described 1.1 in this video. I'll be completing this 1.1 total. So the first topic is general material properties. Now in this 1.1 they basically just introduced that solid state devices, all of the solid state devices which are in the market, those are fabricated from a class of materials known as semiconductors. So all the solid state devices that we use, chips, etc., they are all made up of basically the materials which are fabricated, those are the materials known as semiconductors. Now अगर किसी को यहाँ पे डाउट है कि भाई सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है, बेसिकली बिकॉज इस नाम के पीछे भी कहानी ये है कि जो हमारे बेसिकली जो मटेरियल होता है वो 3 तरीके में हम डिवाइड कर लेते हैं. वो जानती हो गए कंडक्टर्स, एंड पहला ही हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया सेमीकंडक्टर्स, तीसरा हो गया इंसुलेटर्स. तो यही है बस बेसिकली फ़ायदा. ये सेमीकंडक्टर का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेजिस्टिविटी और जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर की कांस्टेंट होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की वेरिएबल होती है. सो यू कैन ऑलवेज चेंज द वैल्यू ऑफ resistivity and conductivity of a semiconductor, but not a conductor and insulator. So therefore we use semiconductors because we have control over this. Now the second इस पे आते हैं, तो दैट इज़ 1.1.1 whatever. So composition, तो बनता कैसे बेसिकली सेमीकंडक्टर जो होता है, तो वो बोलता है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन बेसिकली डोमिनेट्स द कमर्शियल मार्केट राइट नाउ. Silicon is the leading element that we use in commercial right now. All the chips, most of the I would say all of the chips, most of the chips, those are all made of silicon itself. But there are other compounds as well, like gallium arsenide, which is also used, and it also exhibit superior material. It has superior material power, but right now we are using silicon most of it, but maybe in near future it will compete with silicon. But right now silicon is dominating the market, and other alloys, gallium arsenide and sulfur. So this the composition of these three. Now it is used in visible light emitting diodes. It is used in LEDs. This gallium arsenide, just this whole compound element. Now only certain kind of elements in periodic table give semiconductor materials. Like you cannot just make semiconductor materials from any element. Like you ask me, oh, make a semiconductor using copper. No, we can't make it because the copper is basically a metal. So its value of resistivity and conductivity is constant. So you can't change the value, and therefore you cannot make a semiconductor out of copper. So semiconductor materials भी होते हैं, they are made up of certain kind of elements. It's not that you can make this kind of material using any element. Now there is this book जो बनी हुई है, टेबल है जो एक बुक, उस बुक में बनी हुई है. I have made it here as well. So क्या है कि जनरल क्लासिफिकेशन एंड देन स्पेसिफिक एग्जांपल्स है. तो जनरल क्लासिफिकेशन में यह है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं. उसके बाद 3rd to 4 कंपाउंड में जाएंगे, यानी कि ये 3rd to 4 लाइन जो होती है ना अपनी इसकी पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें से ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं. ये GAS, GAP, GSP एंड ऑल ऑफ दोज. नाउ
फर्स्ट सेकंड भी, सेकंड से लेके ये 6 के जितने कंपाउंड होते हैं उनके भी हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ देयर आर अलॉयज एज वेल. या सो दिस इज एन अलॉय. या सो जर्मेनियम आर्सेनाइड sulfur is basically an alloy, and similarly this one. Now these are the semiconductor material that we can use to make semiconductor devices. Now let's talk about purity. So what is purity? तो बात यह है कि जब हम semiconductor devices को बनाते हैं तो they are based on the impurities that we include in them. So extremely minute traces of impurity atoms can have a drastic effect on the electrical properties of the semiconductor. Therefore it is not like कि तुमने सिलिकॉन लिया हुआ है, उसमें तुमने गलती से ऑक्सीजन चली गई या गलती से कार्बन चला गया, देन यू आर सेइंग कि नहीं भाई सही है चल जाएगा. नहीं चलेगा, बिकॉज नो, इम्प्योरिटीज़ हैव वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट. सो नहीं चलेगा काम, इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए. तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है बुक में कि इट इज़ लाइक कि तुम पूरे यूएसए में फॉरेस्ट लगाते हो मैपल ट्री का, एंड उस पूरे यूएसए के कंट्री में तुम इतने सारे फॉरेस्ट लगाते हो उस मैपल ट्री के, उसमें से तुम्हें 25, समझ रहे हो, तुम पूरे यूएसए कंट्री में अगर तुम ट्री लगाओ और उसमें से फिर तुम्हें 25 क्रैप एप्पल ट्रीज़ भी तुम लगाओगे ना, तो दैट इज़ लाइक इम्प्योरिटी. उसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है अपने सेमीकंडक्टर डिवाइस पे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग ऑल दिस. नाउ column in periodic table. Yeah, we can see here 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th. These are the columns. We can silicon, germanium, arsenide, zinc, oxygen. So basically here we are showing that what kind of elements, matlab these elements are the most famous elements and most important elements in the industry right now. So first let's talk about silicon. So this is the most devices are made up of this element only, and this is an elemental semiconductor. This is just based on an element. इतना तो याद ही होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड ये सब क्या होता था. या सो नाउ ये हमारा गैलियम है. सॉरी, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग, जर्मेनियम बोल देती बट इट्स गैलियम. केमिस्ट्री वीक थी मेरी, अभी भी है. या सो इट्स गैलियम आर्सेनाइड. तो इट इज़ अ कंपाउंड. इट्स कंपाउंड गाइस, इट्स नॉट कंपाउंड. ओके, लेट्स करेक्ट दिस. इट्स डेफिनेटली कंपाउंड सेमीकंडक्टर. इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज इन इंफ्रारेड एलईडीज़ और गन डायोड्स वगैरह में यूज़ किया जाता है. अब इसी में तुम जर्मेनियम आर्सेनाइड में ये सल्फर मिला दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉय बन जाएगा सेमीकंडक्टर्स का. इसको विजिबल एलईडीज़ में यूज़ किया जाता है. अब जिंक ऑक्साइड कर लो तो इसको यूज़ किया जाता है सेरेमिक वेरी स्टोर्स में. इट इज़ अ बेसिकली डिवाइस लुक लाइक दिस. ये जो मैंने एमओवी लिखा हुआ है ना, ऐसा सा दिखाई देता है ये डिवाइस. एंड एसओ सॉ डिवाइसेस, सरफेस अकाउस्टिक वेव, ये जो डिवाइसेस होता है, ये जो यहाँ मैंने बना रखा है, तो इन दो डिवाइसेस में जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है इन दोनों डिवाइसेस के टाइप के डिवाइसेस को बनाने के लिए. नाउ लेट्स लुक फॉर द लास्ट टॉपिक. 1.1.3 का लास्ट है स्ट्रक्चर. इसमें बेसिकली यही बात कर रहा है कि जो अमेरफस होता है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है. यू कैन सी इफ़ द एलिमेंट इज़ लाइक दिस, वो ऐसा दिखागा अगर वो अमॉर्फस होगा. तो यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, बस एटम्स दिख रहे हैं बट दे हैव नो ऑर्डर इन दैम. नाउ अगर तुम देखोगे, ओह ओके, मैंने एक गलती कर दी है गाइस. यू कैन क्लियरली सी दिस मिस्टेक. इफ़ यू कांट सी दिस, रॉन्ग. ओके, व्हाट आई हैव डन इज, लेट मी, ओहो, so this is actually polycrystalline. And this one is crystalline. Yeah, गलती कर देनी चाहिए, याद रहता है. सो दिस इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन. इसमें क्या होता है, या बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा लगता है. नो प्रॉब्लम, बस इसको यहाँ पे शॉर्ट रेंज करना होगा और इसको यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर करना होगा. और 3D जो एरे बनता है वो एक्चुअली पॉलीक्रिस्टलाइन में नहीं बनता है, वो क्रिस्टलाइन में बनता है 3D एरे. अब यहाँ से देखा जा सकता है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट यू विल सी. अब पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या है, स्ट्रक्चर है पर लॉन्ग ऑर्डर नहीं है. मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, एक ऑर्डर है, यहाँ भी है, लेकिन ये पूरे में नहीं है ऑर्डर. तो ये जो ऑर्डर है ना, ये सिर्फ इतना ही अटका पड़ा है, इतना ही अटका पड़ा है.
या फिर सिर्फ इसी रीजन में, ये जो ऑर्डर है वो इसी रीजन का है, ये पूरे का नहीं है, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। और क्रिस्टलाइन में क्या है, और क्रिस्टलाइन में तो देखो तो वही काफ़ी लंबा ऑर्डर है, ड्यू दिस हैज़ टू बी लाइक दिस, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बेसिकली। दिस इज़ इट फॉर टुडे, let's meet tomorrow and finish the next topic 2 point. So tomorrow I'll start with 2.1. See you guys, see you later, enjoy.